Good morning, friends. Today we are going to talk about the mutual fund money where you can invest it. As we earlier session we talked about where we do the Indian exit, and once we do the exit, then where should we keep our money? Because staying in the bank or staying in some other stock for more than 5 to 6 years will not going to give any return. So this is very important to know where should we keep our money. There are so many options you will find, uh, but which one should be the best one for you? That's what we are going to talk about. So I'll just open up my screen. Okay, if you in previous session we talked about the Nifty, and my other friends had a doubt that is it happen in the others market as well. So I'll just quickly show you uh, that at every index, every country of index behave the same way, which I already told you. And if you see, there is a in 2000 to 2015, Nasdaq was in consolidation phase, and after that it started moving up. So so it happens in every country. Only thing is that where should we invest our money now? uh, Quickly I'll just we'll go through the possible options. What we have is, first option we have is to directly go and invest in, first, this, if the index is falling you can go with the stocks, but I'll tell you this option is completely wrong. Once your index is falling, your stocks are falling more than more than high speed than the index, so ये तो option होगा नहीं. Now what is the next option we have is to look for the other index ऑफ निफ्टी गिर रहा है तो हो सकता है कि मिड कैप काम अच्छा करे, स्मॉल कैप अच्छा काम करे. नहीं, ऐसे नहीं होगा. व्हेन देयर इज़ अ फॉल, देन नाइदर द मिड कैप नाइदर द स्मॉल कैप कुछ भी काम नहीं करने वाला. सबसे लिक्विडिटी जो है वो विड्रॉ करने वाला है. तो उस केस में जो है ये भी अपना ऑप्शन नहीं रहेगा. अब थर्ड ऑप्शन और क्या बन सकता है? एक हो सकता है कि स्टॉक्स में नहीं, मिड कैप में नहीं, कमोडिटीज़ में ट्राई करते हैं. कमोडिटीज़, तो कमोडिटीज़ में भी ऐसा है कि व्हेन वी हैव अ बिग फॉल, अगेन इट्स डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री. ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री में फॉल आ रहा है तो दूसरे कंट्री में ना आए, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है. तो उसके लिए हमें थोड़ा जो है एक ग्राफ पे जाके हम उसको एनालाइज करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है. हम गोल्ड का चार्ट लेते हैं, एंड देन टू कंपेयर विद अदर कंट्रीज इंडाइसेस, उसके बाद हम लेते हैं ये शंघाई इंडेक्स है, इसको हम लेते हैं. चाइना का इंडेक्स है. कोस्पी ये साउथ कोरिया का है. देन हम लेते हैं जापान का.
तो अभी जो है हम इसमें आप देखोगे, इसमें सभी इंडाइसेस जो है मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। मान के चलिएगा कि गोल्ड जो है हमारे ब्लू लाइन में है। जब गोल्ड हाई था उस टाइम में ऑलमोस्ट बाकी इंडाइसेस जो थे, जैसे कि कोसी का जो था वो चल ही रहा था, उसके बाद फॉल आया उसका, साउथ कोरिया का। और उसके बाद ये आप देख रहे हो येलो लाइन जो है ये निफ्टी है। तो 1985 में निफ्टी स्टार्ट नहीं हुआ था, 1991 में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से पिकअप स्टार्ट किया, और पिकअप स्टार्ट करने के बाद फिर एज आई सेड शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा उन्होंने पिकअप किया, तो देयर वाज अ करेक्शन। मीन टाइम गोल्ड was going down, and same time the if you see Kosi was also going down. Then where is the Nasdaq? Okay, so if you see the Nasdaq in 1992, when gold was falling, your Nifty was falling, but in the Nasdaq it was consolidated for a while, but it was again started moving up till it started from 300, 400 till 4000. In 10 years it went up to 10 times almost. Yes, 1994 to 1996, 6 to 7 years it went up to 10 times. So when your commodity was falling, your Nifty was falling, your the some other indices of other countries was falling, in that time the it was the Nasdaq was coming out of the consolidation. So definitely there was a good time. You could have bought म्यूचुअल फंड वन ले लो या ETF ले लो या स्टॉक्स ले लो उस कंट्री के। तो उस टाइम को यू हैड अ गुड चांस टू इन्वेस्ट इन नास्टेक। तो आपके पास अच्छा रिटर्न उसमें आ जाता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि जब नास्टेक गिर रहा था तब क्या पॉसिबिलिटीज़ थी। जब आप देखो कि नास्टेक जो है, नास्टेक बेसिकली यूएसए का इंडेक्स है। तो ऐसे ऐसे होता है कि जब बड़ी कंपनीज या बड़ी लार्ज कैप ही फॉल होना स्टार्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली इंडेक्स फॉल होता रहता है। जैसे कि और वैसे ही नास्टेक कैसा है कि उनका करेंसी जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ों की वजह से जो भी उन्होंने प्रिंट किया होगा मनी या जो भी उन्होंने लिक्विडिटी था वो सब उधर से निकला, तो सब जगह से निकलने वाला था। तो ऐसे होता है कि 2000 का बबल हो या आपका 2008 का हाउस क्राइसिस हो, तो ये सब चीज़ों में आप देखोगे कि उसका इफ़ेक्ट जो है हो सकता है कुछ कंट्री में पड़े, कुछ कंट्री में ना पड़े। तो वो आपका रिसर्च के ऊपर डिपेंड है कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो पड़ सकता है, कहाँ पे नहीं पड़ सकता। उस टाइम में आपको चार्ट में पता चल जाएगा कि वो कैसा एग्जैक्टली बिहेव कर रहा है, तो उससे आइडिया भी लग जाएगी आपको। तो यस, तो ये आपका अच्छा था। बट 2000 में फिर आप इस टाइम में क्या कर सकते हैं आप कि जहाँ पे कि सभी गिर रहे हैं। तो आप उस टाइम में ये देखोगे कि चाइना जो था, चाइना अनफॉर्चुनेटली द चार्ट इज़ वेरी, लेट मी ब्रिंग द चाइना, Shanghai, I guess Shanghai, Shanghai. Yes, Shanghai Composite. This was the one. तो शंघाई कंपोजिट जो है वो आपको, हाँ, अब उस टाइम में जब मान के चलो कि 2000 के बबल में एवरीथिंग वाज फॉलिंग, द नास्डैक फॉलिंग, कोसेप फॉलिंग, साउथ कोरिया, चाइना, इंडियन मार्केट वाज आल्सो फॉलिंग। बट ये जो आप देखोगे गोल्ड जो था उस टाइम,
gold was about to start its pickup. I mean, obviously it fall from 290 to 265 almost. mm, small fall was there, but after then when they were consolidating, you can see it has rose from 300 to 1500 in 2001 to 2012. So in almost 12 years you had a 5 times returns. And the other indices, what they were doing, the Nasdaq, it fell down, it consolidated for more than 15 years. Then your COSPI was consolidating, but there was some pickup, you can see. So those from what is this, 580 to 1600, sorry, yeah, 14 1500. And then your nifty was consolidating. Once it fall from 2000, it was consolidated for again for a while, maybe I would say till 2004, and then again it start picking up from 1900 to the, let's take it 2000 till 6000, 3 times in just 3 years. So you had a, so once it was falling, so you had to keep your money in a right instrument. So it could be the other index, as we discussed. Now I'll just remove this one. You can, and let's check out the 2008 fall as well, so we'll get a more idea. So in 2008 the gold was dropped. If you see, the gold was already, sorry, not the gold, this is uh, China. China index fallen. Then the gold also fallen little bit, definitely you can see here. Then your Nifty, definitely it is fall back, and then it went for the consolidation. COSIF, South Korean index, it fall and it went for the consolidation. Japan, Japan is red one. I guess we are missing something from the Japan, but it was whole time from 1980, 1990s. It was in great depression, or we say in consolidation phase. तो जापान का भी कुछ था नहीं. तो 2008 is almost nothing has worked very well except the gold was good. So you can see from the gold it's went up from 600 to, sorry, 1600. So obviously we already saw the same one. So within a 3 to 4 years you had triple the money. So yes, definitely it was a good bet when the other indices was falling and the other indices went in the consolidation. So you should know. Now there is again, we can time the market, and this is, I know this is a little bit uh, different, which you just heard it, but this is true. You can time the market. You can know that how much time likely the market is going to take. There is no fixed timing, but definitely you can say at least for next 5 years, 6 years, 7 years, likely the market going to be stopped, and you know when it's going to come out, because there are so many techniques are there, uh, technical methods, fundamental indicators are there, so where you can able to understand where likely you can enter in the market. So yeah, so ये जो चार्ट से जितना हमें पता चला है कि देयर आर ऑप्शंस आर देयर, कि हम जहाँ पे भी अपना मनी जो है पार्क कर सकते हैं और हम अपना चिल कर सकते हैं. अभी 2008 में, 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 2008 में,
और एक ऑप्शन रह गया जो हम डिस्कस करेंगे. फॉर दैट आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग. Now yes, you have a chances. Not same country. कमोडिटी ऑप्शन है. गोल्ड हो आपका, सिल्वर, अब वो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अब क्या ऑप्शंस बनता है. देन यू हैव इंडाइसेस ऑफ अदर कंट्रीज. Then third, you can go with the bond as well. The bond will give you the stable income. It's your call. It's your call completely where you want to invest. But you also have a chance to have a you can invest in the gold bond. And last, there again real estate is also there. But as we discussed earlier, when we the bond or real estate or the FDs will going to give you a less return than compared to the other commodities or the indices or the stocks. So again, it will be your call. Do your complete analysis, and then definitely you will find the best suitable option for you. This is from my end, guys. Thank you so much for your time. And for more detailed video about where exactly uh, understand there is a high or where there is a low, there are again some techniques are there, some technical and fundamental, both things we look for it. And once we get that one, then you can do the intro. But there is complete big setup is there, and that much definitely going to take a lot of time. It can't be able to explain just on 1 hour half hour session or 1 hour session. If you like this video, let me know in a comment, and then definitely I'll try to adjust my time, and I'll prepare one video for that as well. Thank you so much for your